Hello, welcome to another lecture on the generics, which are introduced and which are used in the Java language. In the C++, we also have template. These are similar to template in C++, but we will strictly learn about the generics in the Java in this lecture as well. So in the last lecture, we have learned कि हमारे पास एक जेनेरिक क्लास हम किस तरह क्रिएट करते हैं जेनेरिक हमने क्लास क्रिएट की थी एक कंस्ट्रक्टर और उसके अंदर हमने मल्टीपल डेटा टाइप्स पास करके देखा था फॉर द डबल एंड स्ट्रिंग विच इज रनिंग परफेक्टली राइट सो इन दिस लेक्चर वी विल सी कि हम जेनेरिक फंक्शंस किस तरह क्रिएट कर सकते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जेनेरिक फंक्शन यूज़ क्यों कर रहे हैं फॉर एग्जांपल वी हैव ए मेथड टू प्रिंट ए लिस्ट और एन एरे और वट एवर अगर हमारे पास एक इंटीजर एरे है और उसके लिए हमने एक मेथड क्रिएट किया हुआ है विच लाइक रन लूप over the which iterate over the array and prints the elements of the integer array but कल को अगर हमारे पास string टाइप की एरे आ जाती है या करेक्टर टाइप की या बूलियन या फ्लोट नंबर्स की तो देन वी हैव टू क्रिएट अनदर वन तो हम अगर हमारे पास 3-4 डेटा टाइप्स की एरे आती है तो क्या हम हर किसी के लिए अलग अलग क्रिएट करते जाएंगे एक इम्प्लीमेंटेशन देंगे हर कि भाई ये मेथड जो है ये इंटीजर को एरे को प्रिंट इंटीजर एरे को एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहा है और ये डबल के और ये स्ट्रिंग के नो वी डोंट वांट दिस we want to have a general method which can take any type of array as a parameter and print the element of that array so let's see how the things work लेट्स से हमारे पास एक मेथड है स्टैटिक डेटा टाइप स्टैटिक है व्हाई आई एम यूजिंग दिस स्टैटिक बिकॉज आई वांट टू call this method in the main method without creating the object of the main class and directly using the class name static let's say t for the generic and we have void print array and which is taking the parameter array sorry not integer but we will use the generic t array right ये हमने एक generic create कर लिया which will take the array of any data type right now we will implement uh, how this will be printed हमें iterate करना है over the elements of the array right this is the for loop which will be executed for the each element of the array in the sequential order right this is the statement to print the elements on the console right this is the method जो जिसमें हम अलाउ कर रहे हैं कि हम किसी भी डेटा टाइप का अरे जो है वो पास कर सकते हैं इधर इंटीजर it's a string it can be character array or whatever it will be it will be work very well and the perfectly let's say call this method print array and let's say let's first create the array इंटीजर लेट्स से मैं आपको सबसे पहले आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाई आर वी यूजिंग द इंट लेट्स से वी हैव एन इंट array and we have elements of 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 sorry 10 now we are passing array you can see कि ये हमारे पास compile time error दे रहा है this is one of the benefits using the generics कि हमारे पास रन करने से पहले ही compile time पे error आ जाते हैं वो जो फेस होता है इशू के हम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम हम हमारे पास जो एक एरर आ जाता है एक्सेप्शन आ जाती है हम उससे बच सकते हैं उसके उससे दिस इज समथिंग विच आई वांट टू शो कि हम इंट यहाँ पे नहीं यूज़ करेंगे बिकॉज वी आर यूजिंग द जेनेरिक्स int is a primitive non primitive data type right हमें यहाँ पे primitive data type यूज़ करनी है integer is a primitive data type which is itself a class in the Java you can see the implementation which is provided by the Java itself you can see it's a class integer is different and int is different this is something which I wanted to show
दैट्स वाई मैंने यहाँ पे इंट लिखा था। नाउ अब हमारे पास ये एरे है और हम इसी मेथड को पास करेंगे एंड यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे हमारे पास सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो गए वन बाय वन, राइट। अब इसी मेथड के को मैं आपको पास करके दिखाता हूँ। लेट्स से मेरे पास एक अगेन, अगर मुझे करेक्टर एरे क्रिएट करनी है तो मैं एरे इस तरह क्रिएट करता हूँ, राइट। सॉरी, एक्सक्यूज मी, equals let's say a, I have let's say x, and I have let's say d, like this. And now I'll pass the char array, character array. So again the same issue, so I have to use character here, not the char, kinda. Okay, so I'll now run the same method over the different on the different data for the different data type of array of different data type. So मैंने character के लिए pass किया, तो it is working very fine. So this was something which I wanted to show how how the generic functions are implemented and how they work. Main dot, let's say, print array, and for the same array again, and now you can see, excuse me, it is working for the integers as well as for the character. So that's all for today's lecture. Thank you.